Assalamu alaikum students. It's your social studies lecture and today we will discuss the chapter the Earth as a planet. Students open your books, page number 2, rocky planets. So students, before starting our today's chapter, um, I want to discuss the some points of the previous lecture. In our previous lecture, we discussed the universe. That universe is the composition of star, clouds, galaxies, dust particles, and after that we discussed about the 8 planets which revolve around the sun. Okay, so come towards to the topic रॉकी planets. अब हम इसमें वन बाय वन जो है वो planets के बारे में पढ़ेंगे कि different 8 planets को की categories जो है वो बना दी गई हैं जैसे rocky planets. The 4 rocky planets are Mercury, Mars, Venus and the Earth. They are the closest 4 planets to the sun. मर्करी वीनस एंड द अर्थ और मार्स जो है ये इनको रॉकी प्लैनेट क्यों कहा जा रहा है बिकॉज दे आर मेड ऑफ रॉक एंड मेटल्स. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रॉकी प्लैनेट्स क्योंकि ये रॉक से बने हुए हैं एंड मेटल से. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रॉकी प्लैनेट्स. मर्करी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. Venus is the hottest planet of the solar system. Earth is the third planet from Sun and only planet yet to have inhabitants. Mars is half the size of the Earth. Uh, जैसे देखिए हमने बात की कि मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन के सबसे क्लोजेस्ट. अगर हम देखें तो वो जो है वो काफ़ी क्लोजेस्ट माना जाता है मरकरी सन के. वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम में अगर सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करें तो Venus is the hottest planet, and Earth is the third planet from the sun, and the only planet yet to have the inhabitants. Earth is the third planet. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसपे लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, जो रहने के एतबार से ठीक माना जाता है. ठीक है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. मार्स इज हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. सो बेसिकली दीज आर द 4 रॉकी प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन. और ये क्लोजेस्ट मतलब जो है इनमें जो सबसे क्लोजेस्ट है वो मरकरी है. इन 4 प्लैनेट में सबसे हॉटेस्ट जो है वो क्या है, वीनस का प्लैनेट है. एंड जिस पे लाइफ पॉसिबल है दैट इज द अर्थ. And they are much smaller than the gas planets and rotate more slowly. जो रॉकी planets हैं in the comparison of gas planets, ये जो है ये उनके मुकाबले में in the comparison of gas planet they are smaller. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे gas planets की. So come towards gas planets. In previous slides we discussed about the rocky planets. In this slides we will discuss the gas planets. Jupiter and Saturn are the gas planets of the solar system. अगर हम rocky planets की बात करें तो हम उन 4 planets की बात करेंगे जो हमने पीछे डिस्कस किए. बट अगर हम गैस प्लैनेट्स की बात करें इन द सोलर सिस्टम तो दे आर जुपिटर एंड द सैटर्न. दे आर द गैस प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. गैस प्लैनेट इज द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. जो गैस प्लैनेट है वो किसकी कंपोजिशन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द ऑल प्लैनेट्स. अगर हम बात करें कि 8 प्लैनेट्स में से बिगेस्ट प्लैनेट की तो जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द ऑल प्लैनेट्स एंड द सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इसी तरह से अगर हम बिगेस्ट की बात हम सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो दैट वुड बी सैटर्न. सो अगर हम इनकी बात करें कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं सन के पास अपना, तो अगर हम इसकी जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है इट टेक्स 12 years टू कंप्लीट its round and the Saturn takes approximately 29.45 Earth years to complete one round. So these are the gas planets. And come towards ice planets. Ice planets are the Uranus and the Neptune. They are composed of ice, rocks and oceans. इनको आइस प्लैनेट्स क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आइस एंड रॉक्स एंड ओशंस. ठीक है, आइस रॉक्स और ओशंस की वजह से नेपच्यून और यूरेनस को आइस प्लैनेट्स बोला जाता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द आइस किंग्स. एंड यूरेनस इज द 7th planet from the sun. In our first lecture there is a picture of the
प्लैनेट्स, जो जैसे कि आप बुक में भी आप देख सकते हैं, बुक का पेज नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिनमें प्लैनेट्स जो है अपने ट्रैक में अपने ऑर्बिट्स में जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करें, ठीक है। तो यूरेनस इज द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर सन से देखा जाए तो यूरेनस जो है वो सेवंथ प्लैनेट है, एंड नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और इसी तरह से अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून जो है वो लास्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। Dwarf planets. Up to the year 2006, Pluto was considered to be the ninth planet of the solar system because of its smallest size and other inadequate qualities. Scientists eliminated it from the solar system and categorized it as the dwarf planets. So, dwarf planet. What is the meaning of dwarf? Dwarf is basically a very small. Okay. In the picture, you can see Pluto is a very small size planet. So, it was a ninth planet of the solar system. लेकिन इसके बहुत छोटे साइज की वजह से और डिफरेंट क्वालिटीज की वजह से साइंटिस्ट एलिमिनेटेड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो साइंटिस्ट ने इसको सोलर सिस्टम से ही एलिमिनेट कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स अ स्मॉलर साइज, एंड कैटेगराइज इट एट द ड्वार्फ प्लैनेट, कि इसको कैटेगराइज कर दिया गया कि इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, कि बहुत छोटा था साइज में, एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। Come towards your home task. Your home task is learn the names of 8 planets of the solar system. As you can see the 8 planets in your book, page number 2. There's a diagram of the 8 planets. आप जो है वहाँ से 8 planets के नाम को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज रीडिंग बुक पेज नंबर 3। आपने बुक का पेज नंबर 3 अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेज लेक्चर, यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।